बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं उस्मान अहमद रिएक्शन। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने घर वालों के साथ खैर खैरियत से होंगे और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज की जो हमारी वीडियो है उसका जो टॉपिक होने वाला है वो है कि आई नो इट्स हराम बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला सो मर्सीफुल। नाज़रीन, आपने नोट किया होगा अक्सर हम में से अक्सर लोग यानी कि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि जिनको अगर हम गुनाह का काम कर रहे होते हैं तो हमें ये पता होता है कि ये गुनाह का काम है, लेकिन फिर भी हम अपने दिमाग में क्या रखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सो मर्सीफुल है तो हम ये गुनाह करके माफ़ी मांग लेंगे। नाज़रीन, क्या पता बाद में हमें माफ़ी की तौफीक ही ना मिले, तौबा की तौफीक ही नसीब ना हो, फिर हम क्या करेंगे। तो नाज़रीन, इस वीडियो में देखते हैं कि हमें क्या बताया जाता है और कैसे इससे बचने का तरीका बताया जाता है, ये क्या इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो हम इसको देखेंगे और उसको समझेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो नाज़रीन, गुजारिश ये कि वीडियो के आखिर तक देखिए रहे, आखिर तक बने रहिएगा ताकि इससे हासिल होने वाली जो मालूमात हैं वो आप सही तौर पर सीख सकें और उसको अपनी सही तौर पर अपनी अमली ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकें और दूसरों तक पहुँचा सकें। तो मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो जल्द अज जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच जाए। इसके अलावा मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो नाज़रीन, मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। And in these few minutes that I have left with you, I want to share with you this is a big problem. It's a big problem. I see this problem in America and I'm also seeing it here. I was realistic before I came here. We're a global world now. The problem of Muslim youth in America are the same as the problems of Muslim youth in Qatar or in Dubai or in Saudi or in Pakistan or in Egypt. The youth have the same problems. You have the problem of some kids saying, some young people saying, and even older people saying, I know it's haram, but Allah is so merciful, man. He's like Ar-Rahman Ar-Rahim. I know it's haram, but come on, Allah is He's not gonna punish me for that. He's gonna take it easy on me. I want to help you understand this problem. Because Allah described His love and His mercy with such an extreme way, some people might try to take advantage of it. Some people might say, it's just a little bit of drugs. It's not that much. I just do it like twice a week. And I don't do it on Friday. And I stop all of Ramadan, I stop. I don't drink a single, bottle of liquor in Ramadan. But other than that, sometimes, it's okay. Ar-Rahman Ar-Rahim. I'll make Umrah this year, it'll be fine. They figure out they can just eat haram things, look at haram things, do haram things, and it's okay, Allah will take care of it. Allah will forgive. I want to give you an example to help you understand this. One of my earliest jobs was I used to teach at a school. Young kids, these are 7-year-old kids, 2nd, 3rd grade kids. And I thought that these kids are going to love me. I will tell them stories, I will make jokes with them, I will jump up on the desk and I will jump around and entertain them and I will scare them and all kinds of things. These kids used to love me. I used to go in there and tell jokes and tell stories and they used to be loud. The principal used to come in and say, what's going on here? And I used to say, sorry, we'll calm down. I did this for a whole week with these kids. I used to walk into class and the kids used to clap. But then after a week, I go back into class and I say, okay guys, open up chapter 5. Nobody opens up chapter 5. They're all looking at me. Tell us a story. Tell us another joke. And kids are talking to each other. There are people jumping around. There's a kid who's got a pencil in his hand and he's writing his name on the wall. And he's looking at me and he's writing it. And he's looking at me again and he's writing it. You ever see that happen? And then his friend says, I think he sees you. He says it to him and he goes, I know, but he's a nice guy. And he keeps going. They think I'm merciful. They think I'm kind. So they figure, hey, this is a nice teacher. We should do whatever we want. When Allah describes His mercy and His love, some slaves of Allah, and they try to take advantage. Like Allah is so merciful, no problem.
I'll give you one more example before I conclude. I haven't introduced Allah to you yet. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim is 2 ayat. There are 3 ayat that introduce us to Allah. But before I get to the 3rd ayat, I want to give you a simple lesson. Imagine there's a man and he has a slave. So this guy has a slave. And he tells the slave, you can do whatever you want. Here's the field. He owns a field. He said, you can do whatever you want in this field. You can eat whatever you want, go wherever you want. Just don't go on the other side. There's a line. He drew a line with chalk. Not even a fence. It's just chalk. Just don't go on the other side. So the slave is happy. He could do whatever he wants. And one day the slave is close to the border. And he falls. And he falls on the wrong side. And he immediately looks at the master staring at him. And he says, sorry. It was a mistake. And the master doesn't say anything. No problem. He doesn't say anything. So he gets up, he dusts himself off. He's okay. Next day he pretends to fall. And I says, sorry. The master doesn't even get up, doesn't even look angry. He says, this is pretty good. I mean, he told me not to go on the other side, but I've gone twice and I didn't get in trouble. This must mean it's okay. Some Muslim says, I had some haram substances and no lightning struck from the sky. Allah did not send like an axe wielding from the sky chopping my tongue off when I lied. Should be okay. Allah is okay with it. You know, you try to earn some money the wrong way, you look up at the sky, oh, nothing happened, I'm okay. I can do some more. So this slave starts going on the other side over and over and over again. And a whole year goes by. Now he spends most of his time on the other side. So the master calls him. After 1 year he calls him. And he says, so how's it going? Pretty good. You're pretty kind. Love it. And he says, listen, remember when I told you shouldn't go on the other side? He goes, yeah, I remember. Well, I've decided to punish you for that. But I will punish you for I've been counting. Every time you went, and I will punish you for every single time you went, but I will punish you all at the same time. I was holding off. I didn't want to punish you right away. I wanted to punish you eventually. It was your choice. I didn't stop you from going. I just said, don't go. And I told you there will be consequences. But I've decided to get you right now with all of it. All at the same time, 1 year's worth of transgressions. This is Judgment Day. The human being thinks you can get away with whatever you're doing. No problem. I did something bad yesterday, nothing bad happened today. I should do it again today. Then I could do it again tomorrow, nothing's going to happen. It's all good. But Allah Azza wa Jal says, He puts the picture, He balances the picture, He says, Maliki yawmiddin. He's the master of, He's the owner of the day on which perfect judgment will be executed. Everybody will get exactly what they deserve. He's the master of that day too. So as I leave you in this khutbah, I want to share with you that Allah balanced 2 things. On the one hand, He is extremely loving, extremely merciful. And on the other hand, if you take advantage of His love and His mercy, then He will judge you too. बिल्कुल नाजरीन, जैसे कि इन्होंने वीडियो में बताया, अल्लाह पाक ने 2 चीज़ों में बैलेंस रखा हुआ है, यानी कि एक साइड पे वो एक्सट्रीमली लविंग एंड मर्सीफुल हैं और दूसरी तरफ कि अगर कोई उस मर्सी और उस लव का एडवांटेज उठाने की कोशिश करता है तो उस तरफ वो जज भी कर रही हैं। नाज़रीन, जैसे कि इन्होंने वीडियो में बड़ी अच्छी एग्जांपल दी, जैसे कि क्लास में एग्जांपल दी, सबसे अच्छी एग्जांपल उन्होंने स्लेव की दी कि आपने एक स्लेव को बोला कि आप ये एक फील्ड है, आपने इसके अंदर ही रहना है, इसके अंदर आप जो कुछ करना चाहते हैं करें, लेकिन एक बाउंड्री लगा दी आपने चौक से और उसको बता दिया कि आपने यहाँ से नहीं जाना, यहाँ से आगे इसको क्रॉस नहीं करना। वो एक दफ़ा गलती से गिर जाता है तो वो देखता है, मास्टर से कहता है सॉरी, लेकिन मास्टर कहता है कोई मसला नहीं, वो उठता भी नहीं। तो अगले दिन वो ऐसे दिखावा करता है कि वो गिर गया और फिर सॉरी करता है, फिर देखता है कि मास्टर गुस्से में नहीं है, एंग्री नहीं लग रहा, तो फिर वो कहता है कि नॉट अ बिग प्रॉब्लम। फिर अगली बार वो दोबारा गिरता है और ऐसा बार बार करता रहता है और फिर क्या कि अपना वो ज़्यादातर टाइम फील्ड के बाहर गुजारता है। और 1 साल के बाद जब मास्टर उसको बुलाता है और पूछता है कैसा जा रहा है, तो बोलता है बहुत अच्छा, कि आप बहुत मेहरबान हैं, बहुत रहीम है। तो मास्टर उसको कहता है कि अब
तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कहा था कि बॉर्डर क्रॉस नहीं करना, लेकिन तुमने क्रॉस किया। मैंने तुम्हें सिर्फ कहा था कि क्रॉस नहीं करना, मैंने तुम्हें ज़ोर नहीं दिया, लेकिन इतना बताया था कि बॉर्डर क्रॉस करोगे तो कॉन्सिक्वेंसीज होंगी। तो अब जो तुमने 1 साल तक बॉर्डर क्रॉस किया, अब मैं तुम्हें इकट्ठी उसकी सज़ा दूँगा। तो इसको उन्होंने रेफ़र किया एज अ जजमेंट डे। तो हम में से अक्सर लोग यही कि हम सोचते हैं कि झूठ बोल दिया, कुछ नहीं हुआ, कल हम फिर झूठ बोल सकते हैं। या हमने आज ड्रग्स कर ली, कुछ नहीं हुआ, हम कल फिर कर सकते हैं। आज हमने किसी का दिल दुखा दिया, कुछ नहीं हुआ, हम फिर किसी का दिल दुखा सकते हैं। या आज हमने गलत तरीके से पैसा कमा लिया, कल हम फिर कमा सकते हैं, कुछ नहीं हुआ। तो नाज़रीन, इस सब का हिसाब जजमेंट डे पे लिया जाएगा। जैसे कि इन्होंने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, रहमान और रहीम तो वो हैं भी, लेकिन साथ ही साथ मालिकी यौमिद्दीन, यानी कि आखिरत का जो दिन है उसके भी मालिक, यानी कि जिस दिन परफेक्ट जो है जजमेंट होगी। तो नाज़रीन, इस चीज़ को समझना चाहिए कि जो चीज़ हराम है वो हराम है, और जिस चीज़ से मना किया गया उस चीज़ की कॉन्सिक्वेंसीज होंगी। तो हमें चाहिए कि अपने आप को हराम से, गुनाहों से बचाएं, ताकि क़यामत के दिन हम अल्लाह के गज़ब के बजाय अल्लाह के रहम के तलबगार हों। और नाज़रीन, जब अल्लाह का रहम हमें नसीब हो जाएगा, अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह की रज़ामंदी हमें नसीब हो जाएगी, तो वो दुनिया की तमाम कामयाबियों से बढ़कर सबसे बड़ी कामयाबी होगी। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा, और अगर सीखा है तो उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, और साथ ही साथ उसको जितना ज़्यादा हो सके दूसरों तक शेयर करें। नाज़रीन, दिस वाज माय रिएक्शन। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू डिड देन प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड लीव डाउन योर lovely comments in comment section. See you soon inshallah in next video. Till that time, Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh.